अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ स्टमक जिसको कहा जाता है, और गैस्ट्रिक कैंसर। Definition: Stomach cancer is an abnormal growth of cells that begins in the stomach. Worldwide common cancer but less common in US. Incidence highest among Hispanics, African Americans, Asian Americans, males twice as often as females. Older adults of lower socio-economic groups higher risk पर होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? डिफ़िकल्टी swallowing, feeling bloated after eating, feeling full after eating small amount of food, heartburn, indigestion, nausea, stomach pain, unintentional weight loss, vomiting. पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा? एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन फॉर्म इन्वॉल्विंग mucus producing cells of stomach in distal portion. Begins as localized lesion in situ, progresses to mucosa, spread to lymph nodes, and metastasizes early in disease to liver, lungs, ovaries, and peritoneum. Risk factors: H. pylori infection, genetic predisposition, chronic gastritis, pernicious anemia या gastric polyps, ecloridria, lack of hydrochloric acid, diet high in smoked foods and nitrates. Manifestation: disease often advanced with metastasis when diagnosed. Early symptoms are vague, early satiety, anorexia, indigestion, vomiting, pain after meals, not responding to antacids. Later symptoms में हमारा weight loss, cachexia, wasted away appearance, abdominal mass, stool positive for occult blood. Collaborative care में हमें क्या क्या? Support client through a testing, assist client to maintain adequate nutrition. Diagnostic test: CBC indicates anemia, upper GI series ultrasound identifies a mass, upper endoscopy visualization and tissue biopsy of lesion. ट्रीटमेंट इसका क्या है? सर्जरी इफ डायग्नोसिस मेड प्रियर टू मेटास्टेसिस। फर्स्ट पर हमारे पास पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद एनास्टोमोसिस टू ड्यूडेनम, बिलरोथ 1, और गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। सेकंड में हमारे पास पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद एनास्टोमोसिस टू जेजुनम, बिलरोथ 2 और गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। थर्ड पे हमारे पास है टोटल गैस्ट्रेक्टमी इफ कैंसर डिफ्यूज बट लिमिटेड टू स्टमक विद ईसोफेगोजेजुनोस्टमी। यह हमारा बिलरुथ 1 है और यह बिलरुथ 2 है। Complications associated with gastric surgery: dumping syndrome occur when partial gastrectomy, hypertonic, undigested chyme bolus rapidly enters small intestine and pulls fluid into the intestine, causing decrease in circulatory blood volume and increased intestinal peristalsis and motility. डंपिंग सिंड्रोम क्या है कि जिसमें हमारा जो स्टमक का मटेरियल है वो जल्दी से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी स्टमक में वो वेट नहीं करता, वो सीधे ही चला जाता है। स्टमक में जैसे ही आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। मैनिफेस्टेशन इसके क्या होंगे? 5 to 30 minutes आफ्टर मील, nausea with possible vomiting, epigastric pain and cramping, borborygmy and diarrhea. Client becomes tachycardic, hypotensive, dizzy, flushed, diaphoretic. Manifestations 2 to 3 hours after meal, symptoms of hypoglycemia in response to excessive release of insulin that occur from rise in blood glucose when chyme entered intestine से, कि जिसकी वजह से ये जो स्टमक है, स्टमक से हमारा फूड किस में, ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आता है तो उसको डंपिंग सिंड्रोम कहा जाता है। Dietary pattern to delay gastric emptying and allow smaller amounts of chyme to enter intestine. Liquid and solids taken separately. Increased amounts of fat and protein. Carbohydrates, especially simple sugars, reduce. Client to rest recumbent or semi-recumbent 30 to 60 minutes after heating.
Anticholinergics, sedatives, antispasmodic medication may be added. Limit amount of food taken at one time. Common post-op complications are pneumonia, anastomotic leak, hemorrhage, reflex aspiration, sepsis, reflex gastritis, paralytic ileus, bowel obstruction, wound infection, dumping syndrome. Nursing diagnosis हमारी क्या होगी? Imbalanced nutrition, less than body requirement, consult dietitian since client at risk for protein, calorie malnutrition या anticipatory grieving. Thank you. Hope you like it.